In this video, I am going to discuss about the photoelectric effect. But before I start this topic, first I would like to remind you, which already you have studied in the class 10th, thermionic emission. And thermionic emission is the emission of electron from the metal surface due to the heat. When heat is fall are imparted on a metal surface, and the electron which will be takes place, or the emission of the electron which will take place, that one is called thermionic emission. And in this case, that electron which is emitted, that one is called thermions. But here I am going to discuss about the photoelectric effect. But in photoelectric effect, as it is clear, in photo means light. So photoelectric effect is what here. In this case, the phenomena of emission of electrons from metal surface under the effect of light is called the photoelectric effect. It means when the light of sufficient frequency is fall over a metal surface, and when the electron emit from that metal, then this phenomena is called photoelectric effect. And the electron which will be emit from the metal surface, that electron is called photoelectrons. And the current which will be takes place, that one is called photoelectric current. And as you know, the phenomena is called the photoelectric effect. So simply you can say the photoelectric effect is that phenomena in which the emission of electron will take place from the surface of a metal, from the metal surface under the effect of light. In 1887, Hertz observed experiment, or Hertz did one experiment in which he took a vacuum bulb, this one, and there are two plates, metal plates. Actually, he was taken what metal plate? Zinc metal plate here. So this one is वैक्यूम ग्लास बल्ब. ये वैक्यूम ग्लास बल्ब है जिसके अंदर दो मेटल प्लेट्स हैं, P1 and P2. And earlier, when no any light was falling on this plate P1, or suppose this plate P1 and P2, this plate P1 is attached with the negative terminal of the battery, and the positive terminal of the battery through a galvanometer, it is attached with the second plate P2. And in this way you can say here, this battery which is used to supply the current, and galvanometer which is used to measure the presence of current in this electric circuit. इस electric circuit में करंट के प्रेजेंस को मेजर करने के लिए हमने क्या यूज किया है यहाँ पे? गैल्वेनोमीटर. When no any light, जब यहां से कोई लाइट इस प्लेट P1 पे नहीं फॉल कर रही थी, तो in this case you can say this circuit is behave as a open circuit or incomplete. क्यों? क्योंकि P1 और P2 के बीच में गैप है. No flow of electron was taking place in the absence of this light. जब तक ये लाइट नहीं पड़ रही थी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन P1 से P2 तक नहीं जा रहा था, तो यहाँ पे no flow of electron. And in this way you can say the circuit was behaving as a open circuit. So no current was taking place, or you can say this galvanometer was showing no any deflection. ये कब हो रहा था? जब कोई लाइट इस पे नहीं फॉल की. But when the light of sufficient frequency, जैसे यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेस को अल्ट्रावायलेट लाइट यूज किया गया, तो when the light of sufficient frequency were fall on this plate P1, then emission of the electrons takes place from this plate P1. और मैं ये कह रहा हूं कि सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट जब इस मेटल प्लेट पे पड़ी, तब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ इस प्लेट P1 से. एंड सिंस दिस plate P2 is connected through the positive terminal of this battery, so potential on this plate P2 is positive, and the emission of the electron which will takes place due to the effect of light from the plate P1. So these electrons carry the negative charge. Polarity on this one is P2 plate is positive, so all these electrons will start to move from plate P1 to plate P2. And since plate P2 having the positive potential, so all the electrons which was coming from this plate P1 due to the effect of light is reaching on the plate P2, and in this way the flow of electron
takes place from plate P1 to P2. And when the electron flows from P1 to P2, so electric current is set up between these two plate P1 to P2 from P2 to P1, and then a current takes place here. And when the light of the sufficient frequency is fall on the plate P1, then it observed that this galvanometer is showing the deflection. ये galvanometer deflection दिखा रहा था. इसका मतलब जब sufficient frequency की light इस metallic plate पे fall किया, तो इस सर्किट में क्या फ्लो करने लगी? करंट फ्लो करने लगी. So this electron which was emitted from this metal plate due to the effect of light, these electrons was called photoelectrons. And the current we set up in this circuit, that one is called photoelectric current, and this phenomena is called what here? Photoelectric effect. And for this photoelectric effect, light of higher frequency, चाहे लाइट ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी कहिए, चाहे लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ कहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक रहेगी वेवलेंथ उतना ही कम रहेगा. तो फॉर दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, light of higher frequency is more effective than light of lower frequency. Or in other words, you can say, if for photoelectric effect, light of shorter wavelength is more effective than light of longer wavelength. तो बी केयरफुल अबाउट दिस फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए लाइट की, तभी इफेक्टिव फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा ये. नाउ हर्ट्ज एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट. हर्ट्ज एंड लेनार्ड was the two scientists who performed many experiments of the photoelectric effect, and for this purpose they took the different metallic plates. हर्ट्ज और लेनार्ड, ये दोनों साइंटिस्ट ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग प्लेट लेकर के, एंड ऑल्सो बाय यूजिंग द लाइट ऑफ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड द लाइट ऑफ द डिफरेंट इंटेंसिटीज. एंड इन ऑल दीज केसेस इट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज द strength of this photoelectric current which will takes place here. And he observed many results on this experiment. तो हर्ट्ज और लेनार्ड ने किया क्या कि डिफरेंट मेटल प्लेट्स यूज किया, लाइट की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट इंटेंसिटी यूज किए, और उन्होंने फाइंड आउट किया यहां से कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी एनर्जी क्या थी, एज वेल एज ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ कैसे वेरी कर रही थी. तो दे ऑब्जर्व द मेनी रिजल्ट on the basis of their experiment here. So in this case, first, dependence upon the intensity of light. अगर light की intensity change करके ये देखना चाहे कि how this current will takes place or how this current will vary, photoelectric current will change place. Simply ये देखिए कि when the light of the sufficient frequency will fall on it, then photoelectron will emit from this metal surface. और चूंकि इस प्लेट P2 को पॉजिटिव पोलैरिटी दी गई है, पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा गया है, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स P1 से P2 तक पहुंच जाएंगे. एंड व्हेन द मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रीचिंग फ्रॉम P1 टू P2, इट मींस द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल आल्सो मोर. तो सिंपली यू कैन से एज वी इंक्रीज, ध्यान से सुनिएगा, डिपेंडेंस अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इंटेंसिटी ऑफ लाइट मींस as we increase the intensity of light, I am not saying frequency of light, I am saying intensity of light. So on increasing the intensity of light, the number of photoelectrons emitted from this metal plate will also increases. So on increasing the intensity, the number of photoelectrons emitted from this metal surface will also increases. अगर ये नंबर बढ़ेंगे तो इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अब यहां से यहां पहुंचेंगे, एंड व्हेन मोर इलेक्ट्रॉन विल रीच फ्रॉम P1 टू P2, सो इन दिस वे द करंट विल आल्सो इंक्रीज. सो सिंपली यू कैन से ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल आल्सो इंक्रीज as well as the photoelectric current will also increase, but the energy of these electrons will remain same. उनकी एनर्जी नहीं बदलेगी, बदलेगा क्या, उनका केवल उनकी नंबर बढ़ जाएंगे. So in this way, simply you can say, so dependence upon the intensity of light
मीन्स अगर हम लाइट की इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो हाउ दिस फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल चेंजेस. सो सिंपली यू कैन से द फोटो इलेक्ट्रिक करंट आर द रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is directly proportional to the intensity of incident light. अगर हम इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इनका जो रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मेटल सरफेस दैट विल आल्सो इंक्रीजेस. और रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी बढ़ जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन P1 से P2 तक पहुंचेंगे तो करंट विल आल्सो इंक्रीजेस. सो सिंपली यू कैन से ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट the rate of emission of electrons or photoelectric current is also increases, or you can say the photoelectric current or the rate of emission of electron is directly proportional to the intensity of incident light. And when you will draw a graph between intensity of light and photoelectric current, suppose photoelectric current will take on the y-axis, intensity of light on x-axis, एंड यहां मैंने क्या चेंज किया है, इंटेंसिटी. फ्रीक्वेंसी वही है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रहा हूं लाइट की, केवल इंटेंसिटी बदल रहा हूं. तो व्हाट यू विल गेट, द नेचर ऑफ द ग्राफ विल कम्स व्हाट हियर, स्ट्रेट लाइन हियर. सो दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट दैट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द फोटोइलेक्ट्रिक करंट. नाउ सपोज अब बजाय इस P2 को पॉजिटिव पोटेंशियल देने के अगर हम P2 को स्मॉल नेगेटिव पोटेंशियल दें, सपोज इफ द स्मॉल नेगेटिव पोटेंशियल इज गिवन टू दिस प्लेट P2, तो क्या होगा, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग फ्रॉम P1 टू P2 विल स्टार्ट टू डिक्रीज. एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अगर इस प्लेट P2 को एक स्मॉल नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाए तो पहले की तुलना में जब पॉजिटिव पोटेंशियल दिया गया था उसकी तुलना में नेगेटिव पोटेंशियल इसको देने पर यहां से पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पे घट गई. इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, घट गया. तो इट ऑब्जर्व दैट व्हेन यू विल गिव ए स्मॉल नेगेटिव पोटेंशियल टू दिस प्लेट P2, देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज स्टार्ट टू डिक्रीज. इट मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग फ्रॉम P1 टू P2 विल आल्सो डिक्रीज. And slowly again we increase the negative potential. पहले की तुलना में थोड़ा सा नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ा दें तो करंट और घट गई. इसका मतलब ये हुआ कि द इलेक्ट्रॉन विच इज इमिटेड फ्रॉम दिस प्लेट P1 हैविंग द डिफरेंट एनर्जीज. इसका मतलब इस प्लेट P1 से जो ये सब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे इन सबकी एनर्जी अलग अलग थी. जब स्मॉल नेगेटिव पोटेंशियल दिए तो कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाया इस पे, लेकिन ज्यादा एनर्जी वाला पहुंच रहा होगा, इसलिए करंट इसमें फ्लो कर रही थी. तो एज यू विल इंक्रीज द नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द प्लेट P2, द करंट इन दिस सर्किट मींस करंट शोइंग बाय दिस गैल्वेनोमीटर विल आल्सो डिक्रीजेस. इट मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग फ्रॉम P1 टू P2 इज व्हाट हियर डिक्रीजिंग. It means slowly when we increase the negative potential on the plate P2, then the number of electron reaching from P1 to P2 will also decrease, as well as the current in this galvanometer will also what here decrease. Our current in this circuit will also what here decrease. And for certain negative potential on this plate P2, इस प्लेट P2 पे को certain negative potential अगर दे, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाएं तो करंट घटती जाएगी. इसका मतलब यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं उनकी संख्या भी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी. And at the certain negative potential of this plate P2 relative to P1, the photoelectric current becomes zero. किसी certain negative potential पे या किसी certain negative potential इस प्लेट P2 को अगर हम देंगे तो हम देखेंगे कि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है सर्किट में. इसका मतलब उस समय कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है. इवन जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा रही होगी वो भी नहीं पहुंच पा रहा है यहां पे. एंड दैट नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट P2 relative to P1 at which the photoelectric current becomes zero. Photoelectric current becomes zero means no electron is reaching from P1 to P2. So that negative potential is called its cutoff potential. That one is called what here? Cutoff potential.
or stopping potential. Also, you can say this one is called stopping potential or cutoff potential. So several times this we asked in the board exam, what is the stopping potential or define the cutoff potential or stopping potential. So simply you can say stopping potential is that negative potential of the plate P2 relative to P1 at which the photoelectric current becomes zero. As already I have told you कि on increasing the intensity of the light, मैं पहले बताया कि intensity of light बढ़ाने पे नंबर बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनों की, लेकिन उनकी एनर्जी नहीं बढ़ती है. तो इसका मतलब मान लीजिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट I1 हम किए, उस समय स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लीजिए -VO -V0 है. तो अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम I1 से 2I1 कर दें या 2I कर दें, दूरी कर दें, तो करंट बढ़ जाएगी क्योंकि नंबर बढ़ गया, लेकिन इनके लिए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 ही, क्योंकि इनको भी रोकने के लिए उतनी ही नेगेटिव पोटेंशियल की आवश्यकता यहां पे होगी. मैंने बताया कि नेगेटिव पोटेंशियल लगाने पे सर्टेन स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां नहीं पहुंचेगा. और फिर मैं कह रहा हूं इंटेंसिटी बढ़ाने पे एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बढ़ेगा क्या, केवल उनका नंबर बढ़ जाता है. तो इट मींस as we increase the intensity of the light, then the current also increases, but the stopping potential will remain same. So when you will draw a graph between current, suppose here we will take current and here potential difference which will be applied on the plate P2, or simply you can say potential difference. This one, and suppose this potential is 0 and this one is positive potential, this one is negative potential. So when you will draw the graph between this potential difference between P1 and P2, and P2 you are getting giving the negative potential with respect to P1, and as we increase the intensity of light, मैंने बताया कि मान लीजिए पहले intensity of light को हमने क्या डाला, ये डाला intensity of light I, तो करंट ये थी, इसमें ये करंट यहां तक की, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल सपोज दिस वन इज V0. इसका मतलब इस नेगेटिव पोटेंशियल के लिए इस प्लेट P2 को जब ये नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाएगा तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट कितनी हो जाएगी, यहां पे 0 हो जाएगी. बट द करंट इज दिस वन. As we increase this one is intensity of light I is here intensity. For this intensity of light I, current is here. As we increase the intensity of light, suppose from I to 2I, मतलब हम करंट की इंटेंसिटी बढ़ा करके हम I से कितना कर दिए इसको 2I. So now this current increases from here to here. अब ये करंट यहां तक बढ़ गया, but the stopping potential for them is remain same. क्यों? क्योंकि stopping potential डिपेंड करेगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, और मैंने बताया कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे इनका नंबर बढ़ता है, इनकी एनर्जी नहीं बढ़ती है. तो as simply you can say intensity of current is depends on the intensity of the light. Intensity of the current means करंट का बढ़ना या घटना इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो एनर्जी पे डिपेंड करता है. तो सिंपली यू कैन से एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, करंट इंक्रीजेस बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर देम इज रिमेन सेम. तो सेकंड क्वेश्चन था दिस वन हियर, ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन द करंट एंड potential difference and define the cutoff potential or the stopping potential. So simply stopping potential is what here? Stopping potential is that negative potential of the plate P2 with respect to P1 at which the photoelectric current becomes 0. प्लेट P2 का वो नेगेटिव पोटेंशियल P1 के रिस्पेक्ट में जिसपे इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाती है,
that negative potential of plate P2 is called what here? Stopping potential or cutoff potential. और जैसा मैंने बताया कि जिस समय इस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया जाएगा कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक नहीं पहुंचेगा. So in this way we can also measure the maximum kinetic energy of the electron emitted from this plate P2, P1. And suppose the stopping potential is V naught. Suppose stopping potential is what here? V naught. Stopping means this one is negative potential, so no need to write here minus. Suppose stopping potential is V naught. Then the maximum kinetic energy of the electron. Then, since V naught is the stopping potential or cutoff potential, और जैसा मैंने बताया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिसके लिए कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है, इवन द मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी P1 से P2 तक नहीं पहुंच पाता. तो विद ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल वी कैन फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज emitted from this plate P1. How? This maximum kinetic energy of the electron Ek is given by EV naught, where V naught is what here? The stopping potential or cutoff potential. So by using this formula, you can find out the maximum kinetic energy of this electron, which is emitted from this plate P1. So the maximum kinetic energy of the electron is calculated by this formula. And remember this, the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons does not depends on the intensity of light. मैं जैसे पहले बताया था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से इनकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बढ़ेगी कि ये लो इनकी नंबर बढ़ेगी, और नंबर बढ़ेगा तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, लेकिन सबकी एनर्जी जो थी वही रहेगी, एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो बी केयरफुल अबाउट दिस वन. ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, the rate of emission of electron or photoelectric current will also increases. Second thing, the negative potential of the plate P2 with respect to P1 at which the photoelectric current becomes zero, that negative potential is called stopping potential or cutoff potential. And third point, remember this, the energy of this emitted photoelectrons does not depend on the intensity of light. So this one is what here? Dependence of electric current on the intensity of light. Second one, the dependence of photoelectric current on frequency of light. How? अगर हम frequency को change करें तब इनकी photoelectric current या इनकी energy पे क्या प्रभाव पड़ेगा. Second one, dependence upon the frequency of light. इसके पहले मैंने बताया कि how this photoelectric current as well as the energy of the electrons depends on the intensity of light. Up dependence upon the frequency of light. Simply as we increase the frequency of the light, अगर हम इस लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इनका नंबर नहीं बढ़ेगा. रेट ऑफ इमिशन डज नॉट चेंज, और रेट ऑफ इमिशन अगर बढ़ेगा नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगी नहीं. इसका मतलब कि as we increase the frequency of the light, the photoelectric current does not change, क्योंकि वो rate of emission of the electron will remain same. But तो ये frequency करेगा क्या कि as we increase the frequency of light, then the kinetic energy of these electrons will also increase. So remember this, the maximum kinetic energy of the photoelectrons increases linearly on increasing the frequency of light. So simply you can say frequency does not affect the rate of emission or does not affect the current, but it affects the energy of the emitted electrons or emitted photoelectrons. So the maximum kinetic energy of the photoelectrons are the kinetic energy of these photoelectrons which is emitted from these metal plates increases linearly as frequency of the incident light increases. जैसे जैसे हम लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, यहां से निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी? लीनियरली इंक्रीज करेगी. बट
the number of these photoelectrons will remain same. अगर नंबर सेम रहेगा तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी सेम रहेगी. अब on increasing the frequency एनर्जी चेंजेस, एनर्जी इनकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी इन सब की पहले की तुलना में. अगर इनकी एनर्जी बढ़ी तो अब इनको रोकने के लिए यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. इट मींस as we increase the frequency of light, then the stopping negative potential will also increases. क्योंकि एनर्जी बढ़ेगी तो उनको यहां तक न पहुंचने के लिए इसकी नेगेटिव पोटेंशियल भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. सो व्हेन यू विल ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, so when you will draw a graph between current and potential difference for this case for the frequency of light, तो जैसा मैंने बताया फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे नंबर नहीं चेंज होगा. अगर नंबर नहीं चेंज होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट सबके लिए सेम रहेगी, लेकिन इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी. एनर्जी बढ़ेगी तो इनको रोकने के लिए यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. तो जैसे हम मान लें कि फॉर न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो मान लीजिए उन इलेक्ट्रॉनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था, V01, नेगेटिव पोटेंशियल है ये. एंड एज वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम न्यू1 टू न्यू2, तो करंट इज रिमेन सेम, लेकिन इनको रोकने के लिए अब स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अब निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी भी क्या हो चुकी होगी, बढ़ चुकी होगी. तो फॉर देम we will take the stopping potential suppose V02. तो finally what we will observe here, experimentally it is observed that intensity of light बढ़ाने पे rate of emission of electrons बढ़ता था, फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाती थी, लेकिन उनकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता था. और फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर उनकी रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वही रहेगा. इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी वही रहेगी, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. और याद रखिएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. अगर यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी ज्यादा होती जाएगी तो उनको रोकने के लिए यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उनको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. तो इन दिस वे यू कैन से हियर कि हाउ the photoelectric current is depends on the intensity of light as well as on the frequency of light. So in this way you can say when you will draw a graph either between the electric current and potential difference for the frequency or for the intensity of light, so please you will go through once again here what graph is given, what explanation is given, and also you will take the help of your book here. Then again we will discuss the same topic or one more graph depends on it in the next video. Thank you.